मैम हाँ यस बोलो शारदा क्या हो गया? जो आप मास्टर पेज क्रिएट किए थे वहाँ पे मैं कर रहा था मैम प्रैक्टिस, तो वहाँ पे फुटर जब क्रिएट किए तो मैम मेरा एरर आ रहा था। एरर आ रहा है? यस व्हाट इज द एरर? क्या एरर आ रहा है? मैम फर्स्ट लाइन में एरर आ रहा है। ओके इन द नेक्स्ट लेक्चर शेयर योर स्क्रीन ओके। ओके मैम। हाँ मुझे याद करवाओ नेक्स्ट लेक्चर मतलब कल ही है ना, तो आप रेडी रखो आपका सिस्टम जो भी है वो ओके, और मुझे याद करवाओ, देन वी विल सॉर्ट आउट योर ओके प्रॉब्लम। ओके ओके मैम। ऐसे मैं बिना देखे नहीं बता सकती, आई हैव टू सी ओके ठीक है। चलो yes students okay today we will start the unit 4 okay unit 1 unit 2 unit 3 we have already covered okay every topic we had covered with the practicals ठीक है प्रैक्टिकल के साथ हमने कवर किया है all the practicals I have show you how to run in Microsoft Visual Studio okay in the unit तू मत चला तुम्हें कहीं लगा yes यहाँ मत दखली आके तू bye और मैं tell yes यस मैम हाँ म्यूट करो अपने आप को ओके चलो in the unit 1 we have learned basic about the .NET framework okay what is .NET framework the components of .NET framework then what is .NET framework then C# language we had learned in the unit 1 different types of application we can create under the .NET framework that we have learned okay then in the unit 2 we will learn the web application how to create the web application unit 1 we done with the console application in the unit 2 we have done the practical in web application okay how to make web application that we have learned in the unit 2 different controls are there okay reach controls are there navigation controls are there validation controls okay user controls web server controls, HTML controls, okay, what is property, what is event, how to run programs, where to write code, okay, all these things, basic things we had learned covered in the unit 2. Then in the unit 3, we had learned the state management techniques, okay, and designing, how to design web page, okay, master page, style sheet, theme, that also we had covered with the practicals okay error what is error that we had covered in the unit 3 so unit 3 we have completed okay master page theme and style sheet is very important okay for the designing. Now unit 4 today we have started the unit 4. The unit 4 is regarding database okay unit 4 is regarding database. Today we will cover only theory portion okay in the next lectures we will do the practicals regarding database okay so now we know how to create applications okay how to design our applications okay which type of application we can create okay since our basic concept we had learned okay now in this chapter we have to learn how to connect your web pages with your database okay how to connect your web pages with your database. You know what is a database? Database is a group of or you can say the collection of the data means you are used to database to store some data okay up to now whichever concept we have covered in that concept we did not store our data anywhere okay we use the state management techniques in that techniques we stored the our controls data okay we stored our controls data but we cannot see that data we cannot update that data we just retrieve that data but now what we want to do we want to store our data in somewhere okay so we will going to store our data in the database. Now after storing the data we want to update that data we want to delete that data we want to retrieve that data so now we need the database for doing all these things okay so Microsoft.NET .NET Framework provide the concept of ADO.NET okay for the database ADO.NET. Now today we will learn only theory just listen and try to understand when we will do practical you will get the clear idea okay yes ADO.NET. The ADO.NET is a set of classes to interact with data sources such as databases and XML file.
What is database? You know, we have already learned the whole subject database in the third semester. XML files. You can also store your data in XML files. Okay, you can also store and data in XML file, extended markup language. Okay, so if you want to store your data in XML, then you can store your data in XML file. ADO is a acronym of Activex data object. What is the full form of ADO? Activex data object. Remember this thing. Okay, remember this one. Activex data objects. Okay, Activex data objects. It allows us to connect to underlying data or database. Okay, it has classes and methods to retrieve and manipulate the data. Okay, why the ADO.NET is used to connect with the database. Okay, ADO.NET is used to connect with the database. Now you have the question, why we require the database, where we require the database. Okay, for example, you are making the registration form in your project. Okay, so you have entered the getting the data from the users, first name, last name, email ID, address. Okay, so all this data you have to store somewhere. Where you will store? You will store all this data in the database. Why? Because next time when the user will log in, so you will check the user registered data and login data. If the password and username will be matched, then and only then you can allow that user to navigate on the next page. Okay, so that for us for that purpose we require the database. Okay, for example, you are making the online cake book websites. Okay, you are preparing or you are make the website like online cake booking websites. Okay, or shop you can say. So in that you have to store the cake, different types of cake information. You have to store the order information. Okay, you have to store the card information. So for all this information you have to use the database. Okay, without database you cannot make your project. So database is must. Okay, so in your project, then or if you are making your project in Java, if you are making a project in ASP.NET, or if you are making in data project in PHP, whichever language you will choose, but you have to store your data in some database. Okay, so you can store the database, you can store your data in external database also. Okay, MySQL you can use, or Oracle you can use. जो भी database you want to use, you can use, but you have to use the database for your project. Okay, without database you cannot store your data. So in the next day, in the next semester you have to work on the coding portion. In this semester you will work up to the design portion. Okay, in the project आपको ये सेमेस्टर में प्रोजेक्ट में डिजाइन तक करके देना है. इन द नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको कोडिंग स्टार्ट करना है. ओके, तो द डेटाबेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, चलो. The following are a few of the .NET applications that use ADO.NET to connect to a database, execute commands and retrieve data from the database. Okay, web applications, console applications, Windows applications. In all these applications, we can use the database. Various connection architecture. Okay, now there are following two types of connection architectures. Okay, when we are using the database, so we have to connect our database with our web page. Why? Because for example, you are making the registration form. So when user will click on submit button na, so all the information जो अपने registration page में रखा है, first name, last name, address, pin code, ठीक है. तो when user will click on submit button, तो वो सारे information कहाँ पे store हो जाना चाहिए? In the database. Okay, so you will do the connection. अब क्या करोगे? आपका वेब पेज का कनेक्शन करोगे विद द डेटाबेस के साथ. तो जो कनेक्शन करोगे, there are two types of connection है. Okay, two types of connection we can do. The first is connected architecture and the second is disconnected architecture. Okay, simply now अभी दिमाग में इतना ही रखो. आप एक वेब पेज बना रहे हो, रजिस्ट्रेशन का पेज बना रहे हो, ठीक है. रजिस्ट्रेशन पेज यू आर गोइंग टू मेक. तो उसमें जितना भी आप यूजर से एंटर करवा रहे हो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, फोन नंबर, जब यूजर एंटर करेगा, ओके, सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, तो क्लिक करते ही वो डेटा टेबल में स्टोर हो जाना चाहिए. कौन से टेबल में? अब जो भी डेटाबेस, जो भी नहीं, हम लोग हमारे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में वी विल यूज द एसक्यूएल डेटाबेस. तो वो एसक्यूएल डेटाबेस में आपने जो टेबल बनाया होगा, रजिस्ट्रेशन टेबल. ओके, as I told you in the previous lecture, there is only one database, but in one database we can create the multiple tables. आपके प्रोजेक्ट के लिए भी एक ही डेटाबेस होगा. Okay, you will make only one database, and in that database you can create the multiple tables. तो registration page का जो भी डेटा है, that you will store in the registration table. Okay,
तो फॉर एग्जांपल मैंने टेबल का नाम रजिस्ट्रेशन दिया था, व्हेन यूजर विल क्लिक ऑन द रजिस्ट्रेशन बटन वेब पेज पे, तो जैसे ही क्लिक करेगा यूजर तो उसका जितना भी डिटेल्स उसने एंटर किया है वो सारा डिटेल्स कहाँ पे स्टोर हो जाना चाहिए, टेबल में। कहाँ पे स्टोर हो जाना चाहिए, टेबल में। तो उसके लिए वी विल डू दी कनेक्शन। हम लोग क्या कनेक्ट करेंगे, कनेक्शन करेंगे। ओके, रजिस्ट्रेशन पेज पे जितना भी आपने डिटेल्स टेक्स्ट बॉक्स या तो फील्ड रखा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, ईमेल, ये सारा जो भी डेटा है दैट यू हैव टू क्रिएट एज अ कॉलम इन द टेबल। आपको टेबल में उतना कॉलम कंपलसरी क्रिएट करना है, तो ये हर एक डेटा जो है वो टेबल में स्टोर होगा। ओके, तो टेबल में फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन टेबल है, तो वेब पेज में आपने 5 फील्ड लिया है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल। तो सेम जितना भी फील्ड लिया है उतना कॉलम्स आपको यू हैव टू क्रिएट इन योर टेबल। रजिस्ट्रेशन टेबल में उतना कॉलम्स आपको क्रिएट करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल सेम होना चाहिए, तो ही डेटा स्टोर होगा। ओके, because we are going to use the SQL and SQL is a relational database. Relational database मतलब हमारा जो डेटा है that will be stored in the table format. Okay, so we will create one table and we will do the connection of our web page with that table. Okay, जो connection हम लोग करेंगे ना, there are two types, and that connection is two types of the connection. The first is connected architecture होगा and the second is disconnected architecture होगा. Now what is connected architecture? The application remains connected with the database throughout the processing. Okay, that is called the connected architecture. And what is disconnected architecture? The application automatically connect or disconnect during the processing. The application use temporary data on the application side called a database. Okay, now I will explain in the easy language. Connected architecture मतलब क्या? When you will connect with your database ना, तो आपका जो वेब पेज है वो क्या करेगा, होल टाइम कनेक्टेड रहेगा विद द डेटाबेस के साथ, होल टाइम। ओके, होल टाइम आपका जो वेब पेज है दैट इज कनेक्टेड विद द योर डेटाबेस होल टाइम, पूरा जब तक कनेक्शन खत्म नहीं होता, मतलब सॉरी प्रोसेसिंग खत्म नहीं होता तब तक योर पेज विल बी कनेक्टेड विद योर डेटाबेस। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कनेक्टेड आर्किटेक्चर। मैंने क्या बोला, एक ही डेटाबेस होगा एंड इन दैट डेटाबेस वी कैन क्रिएट द मल्टीपल टेबल्स। ओके, तो आप फॉर एग्जांपल आपने जो कनेक्शन किया, अगर वो कनेक्शन जब तक आप प्रोजेक्ट या तो वेबसाइट खत्म नहीं करते तब तक आपका जो है वेब पेज या तो वेब एप्लीकेशन वेबसाइट होल टाइम डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है। दैट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इज कॉल्ड द कनेक्टेड आर्किटेक्चर। एंड व्हाट इज अ डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर? द एप्लीकेशंस, मतलब या तो वेब पेज बना रहे हो या तो वेबसाइट्स बना रहे हो, जो भी एप्लीकेशंस यू आर क्रिएटिंग, ठीक है, वो क्या करेगा, डेटाबेस के साथ होल टाइम कनेक्टेड नहीं रहेगा। ठीक है, वो टेम्पररी कनेक्ट होगा। मतलब फॉर एग्जांपल इन दी हम लोग रजिस्ट्रेशन पेज यूज करें, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन पेज का डेटा किसमें स्टोर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन टेबल में। तो देयर इज ओनली वन डेटाबेस, हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स है। तो इन दैट एप्लीकेशन डिस्कनेक्टेड में क्या होगा कि जो टेबल्स हमको चाहिए ना वही टेबल्स का डेटा हम लोग टेम्पररी कोई एक प्लेस पे स्टोर करेंगे एंड दैट जो आपका पेज है वो टेम्पररी डेटा के साथ क्या होगा, कनेक्ट होगा। दैट इज कॉल्ड द डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर। डेटा सेट उसको बोलते हैं कि वी विल मेक द डेटा सेट। हम लोग एक डेटाबेस डेटा सेट बनाएंगे तो जिसमें जितना हमको डेटा चाहिए ना वही डेटा हम लोग क्या करेंगे, वो डेटा सेट में लाके स्टोर करेंगे। तो आपका जो एप्लीकेशन दैट इज कनेक्टेड ओनली विद द डेटा सेट, नॉट द डेटाबेस। ओके, तो मतलब इन शॉर्ट आपका जो वेब एप्लीकेशन जो है, तो वेबसाइट जो है वो डेटाबेस के साथ परमानेंटली कनेक्टेड नहीं रहेगा। हमको जितना डेटा चाहिए डेटाबेस में से उतना डेटा हम लोग एक प्लेस में लाके स्टोर करेंगे। वो प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा सेट। क्या बोलते हैं, डेटा सेट। तो हमको जितना डेटा चाहिए उतना डेटा हम लोग डेटा सेट पे लाके स्टोर करेंगे एंड दैट हम लोग हमारा एप्लीकेशन को डेटा सेट के साथ कनेक्ट करेंगे। दैट इज कॉल्ड द डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर। क्या बोलते हैं, डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि डेटाबेस एक ही क्रिएट करेंगे एंड वो डेटाबेस में वी विल मेक द डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स। तो जो टेबल का डेटा हमको चाहिए, जो टेबल पे हमको करंटली काम करना है, वो टेबल का डेटा हम लोग क्या करेंगे, डेटा सेट में स्टोर कर देंगे एंड देन आपका एप्लीकेशन जो है वो डेटाबेस डेटा सेट के साथ क्या करेगा, कनेक्ट होगा। उसमें से वो डेटा जो है वो रिटर्न करेगा, अपडेट करेगा, डिलीट करेगा एंड लास्ट में जो भी डेटा सेट में हमने चेंजेस किया वो फाइनली किसमें हो जाएगा, आपका डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। ओके, तो दैट इज कॉल्ड द डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर। आपका एप्लीकेशन जो है वो डेटाबेस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगा। ओके, डेटा सेट का जितना भी डेटा यू वांट यू विल स्टोर दैट डेटा इन द डेटा सेट। कहाँ पे स्टोर करोगे, डेटा सेट में स्टोर करोगे। ओके,
तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर। आई विल शो यू द बोथ टाइप ऑफ आर्किटेक्चर, कनेक्टेड भी दिखाऊंगी प्रैक्टिकल करके, डिस्कनेक्टेड भी दिखाऊंगी, व्हाट इज डेटा सेट, हाउ टू क्रिएट डेटा सेट, हाउ टू स्टोर योर डेटा इन द डेटा सेट, ठीक है, देन हाउ टू कनेक्ट योर एप्लीकेशन विद द डेटा सेट, ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डू इन प्रैक्टिकल, so don't worry, अभी जस्ट याद रखो, ओके, ठीक है। Okay, now this is a diagram of the ADO.NET, how the ADO.NET are connected, okay, तो ये है understanding the ADO.NET and its class library, okay, I am explaining this, see, okay, in this diagram we can see that there are various types of applications, okay, web applications, console application, Windows application that use ADO.NET to connect to the database, okay, for example, this is your applications, okay, this is your application, so you are, suppose you are making web application or Windows application or console application, कोई भी अलग application or any other type of application you are going to make, okay, तो आप जब के application बना रहे हो, ठीक है, वो applications को जो भी डेटा है, द डेटा यू आर स्टोर इन दी डेटाबेस, आप कहाँ पे स्टोर करो, डेटाबेस में स्टोर करो, तो किसके थ्रू स्टोर करोगे, ADO.NET थ्रू, okay, so your application will be connected with the database through the ADO.NET, okay, ADO.NET concept, there are different classes, already classes available है, ठीक है, वो classes का we will use the methods, connection class is there, adapter class is there, we will use the methods, ठीक है, practically करेंगे तो समझ में आएगा, just listen, तो you can use any database, Oracle, SQL Server, OIDB, ठीक है, जो भी आपको database use करना है you can use, but in our subject we will going to use the SQL Server जो inbuilt दिया हुआ है, तो this is ADO.NET system.data.sql client, if you are going to use SQL Server use करोगे, SQL database use करोगे, तो उसके लिए आपको ये namespace you have to mention, okay, मतलब ये namespace में या तो ये header file में all the classes, all the methods available होगा, okay, Oracle यूज करो तो आपको ये नेम स्पेस यूज करना है, OLEDB यूज करोगे तो ये नेम स्पेस यूज करना है, आई विल शो यू, डोंट वरी, देन देयर आर द डिफरेंट क्लासेस है, ये नेम स्पेस है, अलग अलग क्लासेस है, कनेक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कनेक्ट योर एप्लीकेशन विद द डेटाबेस, ठीक है, कनेक्शन के बाद यू विल राइट द यू विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ कमांड क्लास, बिकॉज आपको कमांड लिखना है, देन डेटा रीड करना है, तो रीडर क्लास यू विल यूज, डेटा आपको में कुछ चेंजेस करना है, okay, तो उसके लिए you will use the data adapter, okay, and data set, if आपको disconnected database architecture use करना है तो you will create the data set, मतलब data set मतलब क्या, जितना भी डेटा आपको चाहिए डेटाबेस में से उतना डेटा you will store in the database, तो all are the classes, ये सारे क्या है, classes, connection class, command class, data reader class, adapter class and data set class, all are the classes of ADO.NET, और ये जो ऊपर दिया हुआ ना, that all are the header files, ओके, अगर आप SQL सर्वर के साथ कनेक्ट एट अ टाइम आप कोई भी एक ही डेटाबेस यूज कर सकते हो, ठीक है, तो अगर इफ यू आर गोइंग टू यूज SQL सर्वर तो आप क्या यूज करोगे, ये वाला नेम स्पेस यू हैव टू राइट, ओके, आपको हेडर फाइल ऐड करना है, Oracle यूज करोगे तो ये वाला करोगे, हम लोग जस्ट एक ही यूज करेंगे इन अवर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस SQL सर्वर, तो हम ये नेम स्पेस ऐड करेंगे, हमको ये हेडर फाइल वी हैव टू ऐड system.data.sql client, ओके, तो ये जब व्हेन वी विल राइट दिस हेडर फाइल ना, तो वी कैन यूज ऑल दिस क्लासेस, हम लोग ये सारे क्लासेस यूज कर सकते हैं, कनेक्शन, कमांड, डेटा रीडर, डेटा एडेप्टर एंड डेटा सेट, ओके, ओके, इंपॉर्टेंट क्लासेस इन ADO.NET, जैसे मैंने आपको दिखाया, ऑल आर दी ये इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, विच आर द इंपॉर्टेंट क्लासेस, कनेक्शन क्लास, कमांड क्लास, डेटा रीडर क्लास, डेटा एडेप्टर क्लास एंड डेटा सेट क्लास. I am explaining all this concept because I will ask the questions, MCQ questions, okay, in exam from this topic. So आपको ये याद रखना है. Practically तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे डेटाबेस कनेक्ट करना है, कैसे अपडेट करना है, डिलीट करना है, I will show you. But ये theory is important for your MCQ, for your final exam के लिए, ठीक है? So which are the classes in ADO.NET? So first of all आपको क्या याद रखना है? What is ADO.NET? Full form of ADO.NET. Two types of architecture are there, connected and disconnected, okay, then these are the important classes in ADO.NET, okay, connection class, command class, data reader class, data adapter class and data set class, all are the classes, okay, all are the classes, we have to remember, students. Okay, now we will learn one by one what is connection class. तो
In ADO.NET we use this connection class to connect to the database. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है, तो वो कनेक्शन करने के लिए वी हैव द कनेक्शन क्लास. हमारे पास क्या है, कनेक्शन क्लास है. ओके, आपको कनेक्शन करने के लिए कुछ तो कोडिंग लिखना पड़ेगा ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू कि आप कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे एंड वो कनेक्शन क्लास में आपका डेटाबेस का पाथ यू विल स्टोर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड द कनेक्शन क्लास. Okay, so in ADO.NET we use this connection class to connect to the database. Okay, this connection class also manage the transaction and connection pooling. Okay, तो फर्स्ट कनेक्शन मतलब क्या, आपको डेटा इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, बट उसके पहले यू हैव टू कनेक्ट ना. आपको डेटाबेस कनेक्ट करना है आपके एप्लीकेशन के साथ, तो उसके लिए सबसे पहले यू विल राइट द कनेक्शन क्लास. आप कनेक्शन क्लास लिखोगे, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे एंड वो ऑब्जेक्ट में आप कनेक्शन का पाथ स्टोर, डेटाबेस का पाथ यू विल स्टोर. ओके, द सेकंड इज कमांड क्लास. कनेक्शन कर दिया, ठीक है, देन वी हैव टू राइट द कमांड कि आपको डेटाबेस के साथ क्या करना है. डेटाबेस में से रिकॉर्ड रिटर्न करवाना है, मतलब डिस्प्ले करवाना है, इंसर्ट करवाना है, अपडेट करवाना है कि डिलीट करवाना है, क्या आपको करवाना है. तो दैट यू हैव टू मेंशन. ओके, ये स्टेप्स आपको याद रखना है. स्टेप्स याद रखोगे तो इजीली कोडिंग कर पाओगे. ठीक है, कोडिंग रट्टा नहीं मारना. we will understand the coding and then we will write the coding. ठीक है, हमको स्टेप्स हमको याद रखने के, पहले क्या करना पड़ेगा, देन क्या करना पड़ेगा. तो आपको कोडिंग जो है वो रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू विल इजीली रिमेंबर दैट कोडिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस के साथ कनेक्शन करेंगे. तो कनेक्शन के लिए वी हैव टू यूज द कनेक्शन क्लास. द सेकंड क्लास इज कमांड क्लास. ओके, व्हाट इज कमांड क्लास? द कमांड क्लास provides methods for storing and executing SQL statement and store procedures. Now forget about the store procedure, अभी ये मत देखो, just इतना ही याद रखो. The command class provides methods for storing and executing SQL statements. Okay, जो भी SQL commands है, okay, insert करने के लिए, display करवाने के लिए, update करवाने के लिए, okay, delete करने के लिए, जो भी commands है वो commands हम लोग किसके थ्रू execute करेंगे, command class थ्रू. ओके, यू हैव टू राइट ना कमांड्स. कनेक्शन कर दिया, कनेक्शन के बाद आपको रिटर्न करवाना है डेटाबेस में से डेटा पेज पे, या तो पेज का डेटा इंसर्ट करवाना है, अपडेट करवाना है. तो जो भी आपको करवाना है यू विल डू विद द कमांड क्लास. तो कमांड क्लास विल हेल्प टू यू. ओके, द फॉलोइंग आर द वेरियस कमांड्स दैट आर एग्जीक्यूटेड बाय द कमांड क्लास. ओके, तो कमांड क्लास में इतना सारा मेथड्स है दैट यू कैन यूज. ओके, द फर्स्ट इज एग्जीक्यूट रीडर मेथड. ओके, आप कमांड क्लास यूज करोगे, कमांड मतलब कमांड क्लास को यू विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट, उसमें कमांड पास करोगे. सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट कमांड यू विल राइट, इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कमांड यू विल राइट, अपडेट करना है तो अपडेट कमांड आप लिखोगे. ओके, देन उसके बाद आपको ये मेथड्स जो दिया हुआ वो मेथड्स यू विल यूज, आपको ये मेथड्स लिखना है. ओके, द फर्स्ट इज एग्जीक्यूट रीडर मेथड्स. तो इट रिटर्न्स डेटा टू द क्लाइंट एज अ रो. ओके, इफ यू आर गोइंग टू यूज द एग्जीक्यूट रीडर मेथड, तो क्या करेगा, returns करेगा data to the client as a row. This would typically be SQL select statement or a store procedure that contain one or more select statement. Okay, this method returns a data reader object that can be used to fill a data table object or used directly for printing reports and so forth. तो जो select statement है, in short आपको इतना ही याद रखना है, जो select statement है उसको यूज कर execute करने के लिए, डिस्प्ले करवाने के लिए आपको क्या लिखना है, execute reader method. Okay, the next is execute known query. Execute command that changes the data in database. Okay, only आपको return करवाना है, database से data return करवाना है, select query when you are going to write. तो select query लिख रहे हो तो आपको execute reader only ये method show display करवाना लिखना है, मतलब sorry, you have to write only execute reader methods. Okay, अगर आप update करवा रहे हो, delete करवा रहे हो, insert करवा रहे हो, ठीक है, वो वाले commands लिख रहे हो, तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है, एग्जीक्यूट नोन क्वेरी मेथड. ओके, कौन सा मेथड लिखना है, एग्जीक्यूट नोन क्वेरी. ओके, execute a command that changes the data in database such as update, delete or insert statement. This method returns an integer that is number of rows affected by the query. Okay, कनेक्शन किया, कमांड आप लोगों ने लिखा. अगर आप सिलेक्ट कमांड लिख रहे हो इन द कमांड ऑब्जेक्ट में, तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है, दिस वन. अगर आप इंसर्ट, अपडेट, डिलीट क्वेरी लिख रहे हो तो आपको कौन सा मेथड करवाना है, ये वाला. कौन सा मेथड लिखना है, एग्जीक्यूट नोन क्वेरी. क्लियर, इतना दो याद रखना है. इफ यू आर गोइंग टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, देन यू हैव टू राइट दिस मेथड, एग्जीक्यूट रीडर मेथड इन द कोडिंग में.
अगर आप लोग इंसर्ट अपडेट डिलीट करवा रहे हो तो यू हैव टू राइट द एग्जीक्यूट नोन क्वेरी मेथड्स, दोनों में से एक ही लिखना है। इंसर्ट अपडेट डिलीट करवा रहे हो यू हैव टू राइट दिस मेथड, only select करवा रहे हो तो you have to write this execute reader method. Okay, yes, the third method is execute scalar. Okay, execute scalar, so this method only returns a single value. Okay, ये जो था insert update delete, तो आपने जितना भी insert update delete किया वो सारी चीजें वो डिस्प्ले करेगा। Okay, मतलब रिटर्न करवाएगा तो डेटाबेस में चेंजेस करेगा, जितना भी सिलेक्ट स्टेटमेंट जो भी रोज कॉलम सिलेक्ट करवा रहे हो ये वो डिस्प्ले करवाएगा। एग्जीक्यूट स्केलर मेथड, तो ये मेथड क्या करेगा, इट रिटर्न्स ए सिंगल वैल्यू। ओके, मतलब दिस काइंड ऑफ क्वेरी रिटर्न्स ए काउंट ऑफ रोज और कैलकुलेटेड वैल्यू। फॉर एग्जांपल आपको कुछ एवरेज फाइंड करवाना है और यू वांट टू काउंट द नंबर ऑफ रोज, ओके, कितने रिकॉर्ड्स है, ऐसा कुछ सिंगल वैल्यू आपको रिटर्न करवाना है, ठीक है। तो एट दैट टाइम यू कैन यूज द एग्जीक्यूट स्केलर मेथड। ओके, जनरली हम लोग एग्जीक्यूट नोन क्वेरी एंड एग्जीक्यूट रीडर यही दो मेथड यूज करते हैं, बिकॉज हमको डेटाबेस में से डेटा रिटर्न करवाना होता है, तो डेटाबेस में डेटा अपडेट डिलीट मॉडिफाई कुछ करवाना होता है, तो वी विल यूज वन ऑफ दिस मेथड। एग्जीक्यूट रीडर का तो एग्जीक्यूट नोन क्वेरी, बट एग्जीक्यूट स्केलर कब यूज कर सकते हो, व्हेन यू वांट टू रिटर्न ओनली सिंगल वैल्यू। ओके, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ रोज कितना है टेबल्स में वो काउंट करवाना है, या तो एवरेज। ओके, एवरेज तो क्या एक ही होगा पूरे कॉलम का। ओके, सम एग्रीगेट फंक्शन जो हमने पढ़ा डेटाबेस में, वो उसका आउटपुट इफ यू वांट टू रिटर्न, तो आपको क्या यूज करना है, एग्जीक्यूट स्केलर। हाउ टू यूज, हाउ टू राइट, आई विल टेल यू, डोंट वरी, जस्ट अभी याद रखो। ओके, बिकॉज आई विल आस्क इन द एमसीक्यू में ये सारे क्वेश्चंस, इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आई विल आस्क। व्हाट इज एग्जीक्यूट रीडर, व्हाट इज एग्जीक्यूट नोन क्वेरी, व्हाट इज एग्जीक्यूट स्केलर, सो आई एम फोकसिंग ऑन ऑल दिस theory topics. Okay, execute XML reader, the next is XML reader. Okay, obtains the data from SQL Server 2000 database using an XML stream. Okay, return XML reader object. What is XML, extended markup language? ठीक है, अगर आपको XML थ्रू करवाना है रिटर्न तो you have to write this. जनरली हम लोग ये यूज नहीं करते, हमारे सिलेबस के हिसाब से हम लोग यही यूज करेंगे दिस टू। ओके, तो अगर व्हाट इज XML, आपको इतना भी XML पता नहीं है, इन द नेक्स्ट यूनिट में हमको पढ़ना है XML इन द यूनिट 5, एट दैट टाइम आई विल टेल यू व्हाट इज XML। ठीक है, तो अभी के लिए इसको स्किप करो, इन द नेक्स्ट यूनिट वी विल लर्न अबाउट द XML इन डिटेल, तब जाके आपको समझ में आएगा व्हाट इज XML एंड व्हाट इज दिस मेथड। तो अभी इतना 3 याद रखो। ओके ओके, चलो हमने कनेक्शन कर दिया, कमांड हमने डिसाइड कर लिया कि हमको क्या कमांड लिखना है, क्या कमांड लिखेंगे तो कौन सा मेथड हमको यूज करना है वो हमने लर्न कर दिया। नाउ थर्ड क्लास इज डेटा रीडर क्लास। ओके, थर्ड क्लास इज डेटा रीडर क्लास। So data reader is used to retrieve the data. Okay, it is used in conjunction with the command class to execute SQL select statement and then access the return rows. Listen, क्या है डेटा रीडर क्लास, हमने ऊपर कमांड्स जो है वो कमांड्स लिख दिया। ठीक है, नाउ जो हमने कमांड्स लिखा है जो परफॉर्म करना उसको रिट्रीव तो करना है ना, तो रिट्रीव करने के लिए वी विल यूज द डेटा रीडर क्लास। कौन सा क्लास यूज करेंगे, डेटा रीडर क्लास। इट इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद द कमांड क्लास टू एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट, जो हमने ऊपर एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखे, ठीक है, इन द कमांड क्लास में उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वी विल यूज द डेटा रीडर क्लास। Okay, it is used in conjunction with the command class to execute an SQL select statement. ठीक है, जो कमांड हमने ऊपर लिखा है उसको रिटर्न करवाने के लिए, ठीक है, वो परफॉर्म तो हो रहा है बट उसको एग्जीक्यूट तो करवाना पड़ेगा ना, तो उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए वी हैव टू यूज डेटा रीडर क्लास। ओके, जैसे आप आउटपुट प्रोसेसिंग करवाते हो C equals to A plus B, but you have to printed the value of C ना in on the screen, ठीक है, उसको स्क्रीन पे प्रिंट तो करवाना पड़ेगा ना, आपने लॉजिक लिखा वो परफॉर्म भी हो रहा है मेमोरी में, बट यू हैव टू प्रिंट ऑन द स्क्रीन ना, तो उसके लिए आप क्या लिखते थे, अगेन प्रिंट एफ द आउटपुट इज कॉमा करके वेरिएबल का नेम, तब जाके आपका जो प्रोसेसिंग हो रहा था वो स्क्रीन पे आउटपुट डिस्प्ले हो रहा था। ओके, तो वैसे ही ये प्रोसेसिंग तो हो रहा है, कमांड्स तो एग्जीक्यूट हो रहा है, बट वी हैव टू डिस्प्ले दैट कमांड्स ऑन द स्क्रीन, तो उसको हम लोग किसके थ्रू एग्जीक्यूट करवाएंगे, डेटा रीडर के थ्रू। ओके, नाउ द सेकंड इज data adapter class. Okay, next class is data adapter class. What is data adapter class? The data adapter is used to connect data set to the database. अगर आपको डायरेक्टली ऊपर जो देखा that is up to connected database, अगर आपको disconnected database यूज करना है, ठीक है, तो you have to
स्टोर योर डेटा इन दी डेटा सेट। आपको आपका डेटा किसमें स्टोर करना होगा? डेटा सेट के लिए। तो हम व्हेन वी आर गोइंग टू स्टोर our data in the data set, डेटाबेस का डेटा हम लोग डेटा सेट में लाके स्टोर कर रहे हैं, ओके, देन आपको डेटाबेस के साथ कनेक्ट, डेटा सेट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, ओके। तो एट दैट टाइम व्हाट यू विल यूज? एडेप्टर क्लास यू विल यूज। कौन सा क्लास यूज करोगे? एडेप्टर क्लास। द डेटा एडेप्टर इज यूज्ड टू कनेक्ट डेटा सेट टू डेटाबेसेस, ओके। डेटा एडेप्टर इज यूज्ड टू कनेक्ट डेटा सेट टू द डेटाबेसेस। क्या करने वाले हम लोग? वी आर गोइंग टू यूज डिस्कनेक्टेड डेटाबेस। तो डिस्कनेक्टेड का मतलब क्या है कि हमारा डेटाबेस में से जितना भी डेटा हमको चाहिए वो हमको किस में स्टोर करना पड़ेगा? पहले डेटा सेट में करना पड़ेगा स्टोर, ओके। देन डेटा सेट में हमने स्टोर करके रख दिया हमारा डेटा, तो हमारा एप्लीकेशन को हम लोग किसके साथ कनेक्ट करेंगे? डेटा सेट के साथ। तो जो डेटाबेस एंड डेटा सेट को जो कनेक्ट करता है वो कौन करता है? डेटा एडेप्टर। वो विल connect your data set to the database, the data adapter, okay. The data adapter is most useful when using data bound controls in Windows COM, but it can also be used to provide an easy way to manage connection between our applications and underlying database tables, okay। मतलब वही चीज हो गया कि जो हमको डेटाबेस में से जितना भी टेबल्स हमको चाहिए उतना टेबल्स उतना डेटा हम लोग किस में लाके स्टोर कर देंगे? डेटा सेट में, ओके। तो वो स्टोर करने के लिए डेटाबेस को डेटाबेस के साथ डेटा सेट के साथ कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? डेटा एडेप्टर, ओके। आई नो ये सब थोड़ा थोड़ा ऊपर से जा रहा है, बट वी विल डू दी प्रैक्टिकल्स, तो आपका सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जस्ट लिसन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज प्रैक्टिकल्स में तो सारा आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये सारी चीजें हमको प्रैक्टिकल में लिखना ही है, मतलब कोडिंग में, ओके। इन द कोडिंग वी हैव टू डिफाइन ऑल दिस क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, so don't get confused. The next is data set. You know what is data set, okay। data set में हम लोग जितना भी डेटा हमको डेटाबेस में से चाहिए वो हम किस में लाके स्टोर कर देंगे? डेटा सेट में हम लोग स्टोर कर देंगे। What is data set? The data set is a collection of the data tables. डेटाबेस में से जितना भी टेबल्स हमको चाहिए वो सारा टेबल्स हम लोग कहाँ पे लाके स्टोर कर देंगे? डेटा सेट में, ओके। तो व्हाट इज डेटा सेट? तो डेटा